Today I am going to discuss the topic that is ether. Its general example is diethyl ether. ROR, this is the general formula. R means maybe alkyl group or any aryl group. C2H5, O, C2H5, diethyl ether. Ether, you can see ROR. Or you can also represent ROR dash. Nomenclature. Simple ethers are named alkyl ether, dialkyl ether if symmetric. Like this one is diethyl ether. This is ethyl group, and this is also ethyl group, and this is ether bridge or ether linkage, diethyl ether. This one is diisopropyl, two isopropyl. First one is this, second one is this, that, and this is ether bridge. So this is named diisopropyl ether. This one is methyl group, and this one is butyl CH3 thrice. Butyl methyl ether. If complex, the ether part is named as an alkoxy group, as we have already discussed about alkoxy group in our previous lectures. This is methoxy group, and this one is ethoxy group. मेथनॉल का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, मिथॉक्सी बन गया. एथेनॉल का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो ये इथॉक्सी बन गया. This one is methoxy, and this one is ethoxy. And you can see this is a compound 1,3-dimethoxypropane. Propane, 3 carbon, 1, 2, 3. One position is this is methoxy, and 3 position this is also methoxy, and the compound is called 1,3-dimethoxypropane. And this one is ethanol. One hydrogen is replaced and hydroxy group is attached there, and this is ethoxy. 2-ethoxy ethanol, 2-ethoxy. इस ग्रुप को हमने तरजीह दी है. फर्स्ट सेकंड पोजीशन के ऊपर ये लगा हुआ है, इथॉक्सी लगा हुआ है, तो 2-ethoxy ethanol. पेरोक्साइड्स, ईथर की अगर हम ऑक्सीडेशन करें, एयर ऑक्सीडेशन, तो उससे क्या बनेगा? ROOR. दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड्स. You can see this is methoxy group. This one is ethyl CH3 CH2. Ethyl methyl ether. Ethyl methyl ether. What is the name of this compound? What is the name of this compound? This compound is 2-methoxy butane. 2-methoxy butane. 2-methoxy butane. This is ethylene oxide. Ethylene oxide. This one is furan. All these contain ether bridge, ether linkage. And this is tetrahydrofuran, THF. And this is dioxane. This compound is called dioxane. Next is the physical properties of ether.
ethers are non-polar, no hydrogen bonding, melting point, boiling point, ये है moderate melting point and boiling point, water insoluble, डाईइथाइल ईथर जो है वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर है, वाटर इंसॉल्युबल और उसका बॉइलिंग पॉइंट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, वेरी लिवेबल एंड फॉर्म्स एक्सप्लोसिव peroxides. Reaction: ether have relatively low chemical reactivity, although they are still more reactive than alkanes. Ethers tend to form peroxides in the presence of oxygen or air. The formula of peroxide, that is ROR dash. Ether can be formed in the laboratory or in the industrial through the dehydration of alcohol at high temperature. This is the industrial sense of ether, and the product is diethyl ether, and this is alcohol, 2 molecule of alcohol, ethanol, sulfuric acid plus H2SO4 at a temperature of 140 degree centigrade. Diethyl ether is formed plus H2. This is the industrial synthesis of ether. Next synthesis of ether जो है by Williamson synthesis, and alcohol react with sodium metal to form alkoxide. अल्कोहल रिएक्ट करता है किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ, तो ये क्या बनाता है? अल्कोक्साइड बनाता है. दिस अल्कोक्साइड रिएक्ट्स फर्दर विद अल्काइल हैलाइड के साथ, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, यहाँ पे आर जनरल सिंथेसिस RX to produce ether. This is ethanol, C2H5OH, 2 molecule of ethanol plus 2 Na. This one is sodium ethoxide, C2H5ONa, O negative, Na is a positive charge, plus H2 gas, hydrogen. This C2H5ONa further reacts with RX, alkyl halide. This is ethyl bromide, C2H5Br. Then diethyl ether is formed, C2H5O, C2H5 plus NaBr, sodium bromide. Action of hydroiodic acid with cold Hi, diethyl ether react with Hi, cold condition, ethyl iodide plus ethyl alcohol, C2H5OH. And this is the structure. This is phenyl. You can see benzene ring जो है, this is phenyl, ethyl, and this one is ether. So phenyl, ethyl, ether react with HBr, hydrogen bromide, phenol is formed plus ethyl bromide is also formed, C2H5Br. Reaction with acetyl chloride. acetyl chloride एसिड हैलाइड का डेरिवेटिव जो है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में डेरिवेटिव जो है हमने पढ़े हैं, डिफरेंट डेरिवेटिव, एसिड हैलाइड, acetyl chloride. This is the example of acid halide. Acetyl chloride, CH3, C double bond O, Cl, react with ether, diethyl ether, C2H5O, C2H5. In the presence of zinc chloride, heat is also required. Then ethyl acetate is formed. This is acetate, CH3, C double bond O, C2H5. Ethyl acetate. Reaction with acid anhydride. एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनता है हमने डिस्कस किया पहले, पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया. जब दो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल मिल जाएं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो मिले और कंडेंसेशन रिएक्शन हो, रिमूवल ऑफ वाटर हो जाए, तो उससे क्या बनता है? एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है. ठीक है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या है? CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, टाई यानी एसिटिक एनहाइड्राइड.
This is a whole. This whole is called acetic anhydride. अगर एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल मिले और उनमें कंडेंसेशन हो, वाटर की रिमूवल होता है, तो क्या बनता है? एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, CH3CO फिर OCO CH3। ये रिएक्शन क्या है? ये है डाई इथाइल ईथर। थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ है, ये है डाई इथाइल ईथर। ये ईथर लिंकेज है और ये डाई इथाइल, एक इथाइल ग्रुप ये है और एक इथाइल ग्रुप ये है। जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में ZnCl2 हीट इज आल्सो रिक्वायर्ड, इथाइल एसिटेट बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एसिटेट। अब ये C2H5O फिर OC2H5 डाई इथाइल ईथर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मौजूदगी में Al2O3, टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे क्या बन गया? अल्कीन बन गया, दिस इज इथीन प्लस H2O। इसी तरह डाई इथाइल ईथर जो है, अगर इसका रिएक्शन देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ BF3 at temperature about 150 degree centigrade, 500 atmospheric pressure, ethyl propionate is formed. Ethyl propionate is formed. Last one is the use of ether. Ether is a sweet smelling, colorless, volatile liquid that is extremely flammable. It is used as an intermediate or solvent in certain industrial processes. Ether has been used as general anesthetics for surgeries. It has replaced chloroform, which is considered to be extremely toxic. It is rarely used today and has been displaced by diethyl ether. Diethyl ether is used in anesthesia. In Grignard reaction, ether are used as a solvent. Used as a solvent for oils, fats and gums, used for refrigerator purposes. So all these are the uses of ether. So this is all about ether.